Good evening, everyone. Bah, तमन तो बहुत पंक्चुअल. Good evening and welcome to StudyIQ. So StudyIQ प्लेटफॉर्म को आपण समस्त को स्वागत. तो आज जो सीरीज रही आपनकर MCQ सीरीज राइट. तो ये तो फास्ट एथरे आंसर एमती नहीं कि सब आंसर आसीबो, सब आंसर आसीबो नहीं राइट. चलो फिर स्टार्ट करियो आज सेशन. थैंक यू एवरीवन. Sulogna is saying how are you? Sir, fine. PDF you will get in my channel, more personal channel, that is Wes Mentor. Seithre tamane paijibo. Sikha, good evening. Jai Jagannath to all of you. Supokant as well. बहुत बढ़िया. चलो फिर स्टार्ट करियो आज सेशन को राइट. चलो देखो ओपीएससी रो स्टैंडर्ड जदि हम देखिबा कि स्टैंडर्ड मु कहबिनी, आई वुड नॉट से कि स्टैंडर्ड वर्ड, आई वुड नॉट प्रोनाउंस, पार्डन मी, बट ओपीएससी रो लास्ट टाइम जदि हम जो क्वेश्चंस देखिबा प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस किछि लगभग एमिति फैक्चुअल क्वेश्चन थिला इन ज्योग्राफी. दैट वाज लार्जली द क्वेश्चंस वेयर मैप बेस्ड क्वेश्चंस. तो समस्त देखि दो कि क्वेश्चन जो थिला लार्जली इट वाज मैप बेस्ड क्वेश्चन राइट. जेमति हम कहबा द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड वेयर. ये समस्त जानिचो कि that would be what Africa, but मु पचरबी कि which part of Africa. Good evening the leaves. तो लार्जली जति हम ओपीएससी रो लास्ट ईयर मु कहबी तुमको कि जो ओपीएससी क्वेश्चन थिला ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन थिला, द क्वेश्चंस वेयर लार्जली दैट इज द मैप्ड बेस्ड क्वेश्चंस. हमें कोन कहबा जोडा कि मैपिंग क्वेश्चन थिला, जहा को हमें कोन कहबा इसे मैपिंग क्वेश्चन था को कहि परिबा. चलो कि फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर समस्त जानि सारिछो. The Great Rift Valley जदि मु तमन को ड्रॉ करके देखेबी, if I draw it the Great Rift Valley, then how it would be looks like. So the Great, so Africa map जदि मु ड्रॉ करबी, just a minute. The Great Rift Valley of Africa, it starts like this and moves like this. So this is what divergent boundary. ये होची तमरा Great Rift Valley कोठी अछि ईस्टर्न अफ्रीका. तो जदि दैट मीन्स आमे कोन कहबा दैट इज ईस्ट अफ्रीका. तुम देखि परिबो ये रीजन रहिछि द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका. तो यार आंसर तो समस्त प्राय ठीक दे दैछो राइट. समस्त बहुत बढ़िया आंसर दैछो. एटा तो इजी वन थिला. चलो हम जीवा ताले सेकंड वाला क्वेश्चन को एबे तमरो जोडा न्यूज रे थिला. नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन रो आंसर दियो. द पानामा कैनाल कनेक्ट्स विथ टू वाटर बॉडीज. ये देखो यही भाई इजी क्वेश्चंस तुमको बेसी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आसीबो, बेसी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आसीबो नहीं. डोंट वरी फॉर दैट राइट. देखबा आंसर केते जण एबे दउचो. ट्राई करो. The Panama Canal connects which two water bodies? Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea and the Red Sea, Pacific Ocean and Arctic Ocean. So answer jodi dekhiba asiba start he jichi. So answer jodi ame कहबा 2 number questions कहउछन A. Satru is going for A. Sanu Prasad is going for C. Samir A. Sasmita is going for SS right. Is going for A. Sasmita is going for A. Sikha is going for A. My lifestyle Chubokant, everybody is going for A. Yes, the right answer is what? Atlantic Ocean and Pacific Ocean. It's an artificial canal. A Panama Canal होची कोन artificial canals and Panama Isthmus जो रहिची तमरो Panama country जो रहिची Isthmus रहिची सेठी मध्ये रहिची. एबे बहुत न्यूज रे थिला इथे पई बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रम्प कहउछन कि सेटा हमको फ्री करा जाऊ, यूएसए पई सेटा फ्री करा जाऊ राइट. दैट इज वाई ये न्यूज रे थिला. एंड पानामा इस्थामस मध्ये रहिछि. त माने जानचे इस्थामस कोन? द लैंड दैट कनेक्ट्स द टू लार्ज लैंड मास एज वेल. एंड द स्ट्रेट्स आर व्हाट? द स्ट्रेट्स आर, दैट मींस आमे जेतल कोछि स्ट्रेट्स, दे आर द narrow water body that connects two large water body, and the isthmus is what? Narrow land mass that connect two large land mass. Okay, तो आंसर हे जब तुम मन करो बहुत इजी आंसर थिला एंड इजी क्वेश्चन मध्ये थिला. नाउ इट वुड बी अ डिफिकल्ट वन. Which of the following river does not drain into Mediterranean Sea?
This would be a little bit of difficult, but this is not difficult. If somebody has gone through the mapping part and the world mapping, I don't believe that this would be a difficult one. This would be the easy go one, right? Which of the following river does not drain into Mediterranean Sea? The voice is clear to all. Kamalakant, it's fine. Skip. Why? Skip कौन है? एक कौन गोटे आंसर ना कौन? से कुछ which of the following river does not drain? से कुछ does not drains. Nile river everybody knows के Nile river जाऊँची, Po जाऊँची. देखो गोटे क्लू थाए, गोटे कौन थे क्लू थाए. क्लियर? ओके सुनीता थैंक यू. गोटे क्लू थाए सब क्वेश्चन रे एग्जामिनर ध्यान से मन रखो जेतले एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन बनाउछंती ना से एथि पे क्वेश्चन बनाउ नाहंती कि तमे करि परिबोनी बोली. से किछि ना किछि गोटे क्लू देई थाए ताकि तमे क्वेश्चन टा करि परिबो बोली. And you have to pick out what is that clue. What is that clue? से जो clue टाकू ना तुमको सेटा को clue टाकू पिक करियार अछि. देखो दानूब होउची the longest river of आमे कहबा जदि रशिया रो कहबा वोल्गा रिवर. ओवरऑल जदि हमें यूरोप रो लॉन्गेस्ट रिवर कहबा दैट वुड बी योर वोल्गा रिवर. बट जदि हमें रशिया को माइनस कर दबा दैट वुड बी द दानूब इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप which origins from the what? From the Black Forest region and from the Jura mountain जदि move to be precise. तो ये कोठी की जाऊँ कास्पियन सी को सॉरी अमर ब्लैक सी को सॉरी पार्डन. ये जो दानूब रिवर द लॉन्गेस्ट द सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ यूरोप रिवर जोटा कि तुम ब्लैक सी को जाऊँ ताले जदि ये ब्लैक सी को जाऊँ तो सेटा ही तो नॉट ना. तो आंसर कौन हम बी नाइल रिवर जान द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट होची नाइल जोटा कि तुम कोठ ओरिजिन होची विक्टोरिया लेक विक्टोरिया रु ओरिजिन होची. ओरिजिन है कि पूरा लाइफ लाइन ऑफ कौन इजिप्ट है कि जाई कि पडुची कोठी मेडिटेरियन सी रे. सो दैट मींस ये हिजवा आंसर राइट हिजबो. चलो फिर नेक्स्ट पो रिवर इटली तमरा पो रिवर होची इटली. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा. Which of the desert lies along Tropic of Capricorn? ट्राई करो हे जीवो. हाँ एटा हे जीवो ना. तो नाइल रिवर में देखी से दानूब मु तुमको कहली से जाउची कोठी तुमर ब्लैक सी को जाउची. पो रिवर मेडिटेरियन सी को आसुची. रोन इज कमिंग फ्रॉम व्हाट फ्रांस रु आसुची. पो इज फ्रॉम इटली. तो एथरे फ्लड भी आसे इटली रो जो पो रिवर होची सेते फ्लड मध्ये आसे. एंड रोन होची तुमर फ्रांस रु आसे. रोन होटी कोठी फ्रांस रु आसी थाए. चलो फिर नेक्स्ट से कुछ व्हिच ऑफ द डेजर्ट लाइज अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न सहारा अटाकामा कालाहारी एंड गोबी. कैप्रिकॉर्न कहछि हेले देखि दियो. समस्ते सी वॉफरिंग तो नहीं तो किसी असुविधा तो नहीं वॉफरिंग होनी तमर प्रॉब्लम तो समस्ते सी पई जाई छंती. यस दिस इज व्हाट सी इज द आंसर. रश्मि मध्य कोची सी इज द करेक्ट आंसर. तो देखो जदि तुम मैंने जानव सहारा हूँ आफ्रिकार रही. आटाकामा जदि देखा आटाकामा कौटी आम साउथ अमेरिका. जदि आम साउथ अमेरिका तुम जानिच सहारा डेजर्ट जो रही आमर द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. जदि मुझे ड्र करी फटाफट मु तुमको देखी राइट व्हाट ये जो रही तुम आफ्रिका ये गलत हो गला मैप छाड़ दियो. तो दिस इज द सहारा एटा सहारा रहिबो. एंड हियर इज तुम रहिबो कौन नामीबियन रीजन. एठी रहिबो कालाहारी. तो यहाँ हूँ कालाहारी एटा हूँ नामीबियन एटा हूँ सहारा एटा हूँ कौन सहारा
एठी अछि तमरो कोन नामी एठी नामीबियन एठी अछि नुम्बियन एठी अछि नुम्बियन एठी अछि नुम्बियन डेजर्ट ईस्टर्न डेजर्ट एठी बहुत सारा अछि ईस्टर्न डेजर्ट नुम्बियन डेजर्ट सहारियन डेजर्ट लीबियन डेजर्ट एमती सब रही छी सो दिस इज द आंसर आउ ये गोबी कोठी अछि चाइना गोबी कोठी अछि चाइना ये हला तमरो चाइना रो अछि कालहारी हमें देखले बोत्सवाना रे रही छी आटाकामा में साउथ अमेरिका जदि मु साउथ अमेरिका ड्रॉ करबी हियर वुड बी आटाकामा डेजर्ट एठी रहबो तमरो आटाकामा डेजर्ट right the driest place on the earth and the Sahara the largest desert in the world Sahara the largest desert in the world चले हम देखिबा next which among the following countries is a landlocked one last time एथरु गोटे पचारथिले ओपीएससी गोटे क्वेश्चन पचारथिले landlocked country ऊपर last time पचारथिले सेथरे थिला वियतनाम लाओस कंबोडिया थाईलैंड थिला गोबी दीटारे आसे चाइना रे भी आसबो मंगोलिया रे भी आसबो दीटारे अछि जय जगन्नाथ स्टडी अलोन बोथ रे आसबो हला 5 नंबर से कोची लैंडलॉक्ड कंट्री ना देखा लैंडलॉक्ड कंट्री लास्ट टाइम ओपीएससी मध्ये गोटे क्वेश्चन पचारथिले मु तुमको कहली ओपीएससी लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन थिला बट ऑप्शन अलग थिला ऑप्शन रे थिला थाईलैंड थिला राइट ऑप्शन रे थिला दैट इज वियतनाम थिला कंबोडिया एंड लाओस एटा थिला ऑप्शनल क्वेश्चन सम थिला एबे क्वेश्चन समान अछि ऑप्शन हमें चेंज कर दै छी तो ऑप्शन चेंज करिवारु जदि तमे देखिबो जदि साउथ अमेरिका मैप तमे देखितो इट वुड बी चिले पेरू राइट इक्वाडर ए सब रही तो इट वुड बी व्हाट देखिबा ताली कोन रही इट्स ए बोलिविया चिले तो तमरो कोस्ट को लगी इक्वाडर तो कोस्ट को लगी पेरू तो कोस्ट को लगी आंसर दैट मीन्स आम कहवा सो आंसर इज व्हाट बोलिविया तो आंसर इज व्हाट बोलिविया तो आंसर कौन रहिबो बोलिविया राइट आंसर कौन रहिबो लाओस सेटा तो लास्ट टाइम थिला लास्ट टाइम थिला आंसर कौन लास्ट तो साउथ ईस्ट एशिया रो से क्वेश्चन पचार थिला लास्ट टाइम ओपीएससी तो आम एबे साउथ अमेरिका रो पचार देले सेमती तुमको से आफ्रिका रो पचारि पारे सेमती तुमको से नेपाल वाला इशू एते इजी क्वेश्चन तो आसीबनी राइट साउथ ईस्ट एशिया वाला क्वेश्चन सेटा में देखि थिले चलो अच्छा बोलिविया रे गोटे लेक अछि से लेक रो ना की कहबो से लेक रो ना कोन बोलिविया रे गोटे लेक अछि से लेक रो ना कोन हाँ लापाज कैपिटल रही बोलिविया रो लेक टिटिकाका कोन लेक टिटिकाका बोलिविया रे जो लेक अछि द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेशनल लेक टिटिकाका एंड इक्वाडर इज फेमस फॉर व्हाट इक्वाडर फेमस फॉर की कहबो इक्वाडर फेमस पई कोन बिकॉज ऑफ व्हाट कौन पई चिम्बोराजो एंड कोटापैक्सी टू हाईएस्ट एंड द टॉलेस्ट दैट इज द व्हाट हम कहबा जोटा को हम कहूचे वोल्केनिक माउंटेन रही कोटापैक्सी कोटापैक ताको कोटोपैक्सी भी कहते कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो पेरू जदि हम कहबा दैट इज पेसेटी गोटे सिविलाइजेशन थिला तो सेटा मतलब पेरू सिविलाइजेशन मतलब बहुत इंपोर्टेंट चिले तो जानछ लॉन्गेस्ट कंट्री चिले होची कोन लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका राइट तो एटा हम देखि देले चलो फिर नेक्स्ट which ocean current is warm which ocean current is warm which ocean current is warm whether it's a Labrador Benguela California and the Gulf Stream हाँ चिले रे आउ कोन मिलिबो आ गोटे जिनस देखा जाउछ कोन को ट्रायंगल्स हमें कहूचे हियर इज आल्सो ए ट्रायंगल्स एठी गोटे ट्रायंगल्स भी रही से ट्रायंगल्स भी तुम मैंने पढ़ी थी समस्ते है ना साउथ अफ्रिका रे सॉरी साउथ अमेरिका रे कौन लिथियम ट्रायंगल्स भी रही लिथियम ट्रायंगल्स भी हम से देखा कौन कौन रही तुम से जो तुम चिले कथा रही बोलिविया कथा रही तो लिथियम ट्रायंगल्स से देखा बहुत बढ़िया नेक्स्ट चल देखा यहाँ कौन कौच
वाम से कही वाम आंसर कौन आसी देखिबा सेटा चिली अर्जेंटीना बोलिविया एटा बी किए देला चिली अर्जेंटीना बोलिविया एबीसी बहुत बढ़िया अच्छा एटा कौन आंसर देला 6 रो डी समस्त डी देइछ तो समस्त डी वाह बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया ताले बाकी माने ताले एटा कहि दियो ताले लैब्राडोर कोठी अछि लैब्राडोर जदि देखिबो तमर यूएसए राइट यूएसए हां देयर वुड बी यूएसए एंड ग्रीनलैंड एठी रही छी लैब्राडोर कोल्ड करंट अच्छा गल्फ स्ट्रीम एठी रही छी हियर इज गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट बेंगुइला कोठी देखा जो साउथ जो अफ्रीका जो तो हमर कहबा अफ्रीका रही छी तो अफ्रीकार एठी देखा जो तुमको बेंगुइला कोल्ड करंट एठी देखा जो बेंगुइला कोल्ड करंट कैलिफोर्निया कोठी देखा जो एठी देखा जो कैलिफोर्निया कोल्ड करंट बस हे गेला तो एठी देखा जो सी एठी देखा जो डी एटा रहबे तुम्हारा ए एंड दिस वुड बी बी दिस वुड बी बी हे गेला एमान को लोकेशन मध्य मु कहि देली चलो फिर राइट एज वो समझते ओशन करंट और बाकी ओशन करंट बहुत आगुर मध्य हम डिस्कस करिचे ठीक अछि अच्छा मते कई जने को गल्फ स्ट्रीम आगु को जाई कि को ना रे जणा छिबो जदी त माने कहले गल्फ स्ट्रीम तले आगु को जाई कि से को ना रे जणा छिबो गल्फ स्ट्रीम एनीवन गल्फ स्ट्रीम तमरो स्टार्ट हबो इठू मो अमेरिका मैप ड्रॉ कर दउची now from here it will move like this here is Greenland ताले एठी हमें कहूचा को गल्फ स्ट्रीम हियर इज एठी कोन ना रे जणा जिवो एठी कोन ना रे जणा जाय एठी कोन ना रे जणा जाय एठी आको हमें कोन कहबो फ्लोरिडा करंट फ्लोरिडा एठी कोन जिवो इरमिंजर एठी कोन जिवो नॉर्वेजियन राइट तो डिफरेंट डिफरेंट जगह रे डिफरेंट ना रे ओके एटा केते नंबर आसो 7 नंबर नै कि अच्छा रिंग्स ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट ठीक अछि अच्छा रिंग्स ऑफ फायर रो शेप केमती ही थाए एटा तो बहुत इजी ही जाउची मते को रिंग्स ऑफ फायर रो शेप केमती ही थाए व्हाट इज द शेप ऑफ रिंग्स ऑफ फायर शेप कोन what is the shape of rings of fire रो शेप कोन की कहबो रिंग्स ऑफ फायर तो बहुत इजी सेटा मु डिस्कस करबी नाही तार शेप कोन सस्मिता लिखुछ अटलांटिक ओशन मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बहुत बढ़िया सेमी सर्कुलर ना हॉर्सू व्हाट हॉर्सू यस द राइट आंसर इज व्हाट हॉर्सू कोन रहबे तुमरो हॉर्सू दैट इज द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर हॉर्सू द राइट आंसर इज हॉर्सू एटा मन रखिबो सेमी सर्कुलर कहबनी इट्स ए हॉर्सू राइट इसे हॉर्सू शेप अच्छा मते रिंग्स ऑफ फायर रे केते परसेंट अर्थक्वेक हे थाए दुनिया रो केते परसेंट अर्थक्वेक रिंग्स ऑफ फायर रे हे थाए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच माउंटेन सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया yes almost 90% and volcano रोची तमरो लगभग 70 to 75% तो 90% earthquake देखा जबो and more than 70% of volcano and more than 70% of volcanoes एटा मध्ये मन रखियो हैला मु केते कहितली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर केते एरिया 40,000 किलोमीटर सेटा केते कहितली मु रिंग्स ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर केते 40,000 किलोमीटर कैन यू इमेजिन रिंग्स ऑफ फायर होची 40,000 किलोमीटर
horseshoe shape, 90% earthquake, and more than 70% of volcanic eruption. This is the what most, I would say, what researchable place तमे कहि परिबो, right? चलो next questions. Which mountain separates Europe and Asia? ये तो बहुत easy, but मु पचारिबी आखु difficult करिबी question. यूराल माउंटेन, ठीक अछि. मते एबे को पायरिनी कोठी देखा जाए, ये जो पायरिनी कोठी देखा जाए, दिस वन पायरिनी कोठी देखा जाए, पायरिनी कोठी देखा जाए. एनीवन? पायरिनी आइबेरियन पेनिनसुला कोठी देखा जिवो, आइबेरियन पेनिनसुला ए कोठी देखा जिवो, आइबेरियन पेनिनसुला. यूराल एल्प्स तो समस्त जानछ. कॉकासस, कॉकासस कोठी देखा जिवो, ब्लैक सी एंड कास्पियन सी मझिरे. कोठी? ब्लैक सी एंड कास्पियन सी मझिरे कॉकासस. कॉकासस रो हाईएस्ट पीक कोन? माउंट माउंट एल्ब्रूस. कोन? माउंट एल्ब्रूस. एल्प रहउची माउंट ब्लैंक. एल्प्स रो हाईएस्ट पीक कोन? माउंट ब्लैंक. आ रहउची माउंट एल्ब्रूस. यूराल होची तमरा रशिया रे अछि. दिस इज ओल्ड फोल्ट माउंटेन. पायरिनी होची आइबेरियन पेनिनसुला. कोठी? Not audible. जस्ट टिक तो वेट करता हूँ, जस्ट मिनट वेट करो. Now fine. Now fine. Okay, done. हाँ, मु कहूथली कि यूराल माउंटेन को पांजिया टाइम रे हितला, वेदर पांजिया 1 और पांजिया 2. इसे पांजिया 1, इसे पांजिया 1. Now next questions. Which one of is the largest freshwater lake by surface area? By surface area. Largest freshwater lake by surface area. Which one of the following is the largest freshwater lake by surface area? Whether this is Lake Baikal in Asia, Lake Superior in USA, Lake Victoria in Africa, Lake Tanganyika in Africa. Now it's fine, right? बर्तमान ठीक ठाक अच्छी समझते हैं, right? Clear. तो ये मुझे वैल्यू ऐड कर देवी तुम मन को कही दिए, मु कही दिए, ठीक है. लेक बैकाल जदि हम कहबा द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक बैकाल होची रशिया रे अछि. दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. दिस वन इज व्हाट? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. एंड लेक तंगानिका इज द सेकंड deepest. This one is the second deepest lake. Lake Superior जहाँ को आम कहूँ होम्स, HOMES, Huron, Ontario, Michigan, Erie Superior, and this Superior is the largest lake. Like Lake Victoria is the second. ये है तुम कौन? सेकेंड. सरफेस रे जदि आम देखा
देख डेप्थ रे नंबर 1 किए लेक बैकाल, ध्यान से सुनो, डेप्थ रे नंबर 1 लेक बैकाल, वॉल्यूम रे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेक बैकाल दीटा रे नंबर 1, किंतु सरफेस एरिया रे होची किए सुपेरियर, सरफेस एरिया रे सेकंड किए सी, दैट मीन्स विक्टोरिया। टिके ध्यान से सुनिबो, एटी कंफ्यूज हबार नहीं, मु कहली ना कंफ्यूज हबनी एठी, आउ टिके तमन को मु आउ थरे रिपीट कर देबी, एथरे कंफ्यूज हबनी, अगेन मु रिपीट करूची कि कंफ्यूज हबनी एथरे हैला, आउ थरे रिपीट कर दउची। देखो जो लेक बैकाल होची डीपेस्ट लेक एंड वॉल्यूम रे मध्य नंबर 1, लेक टांगानिका सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड वॉल्यूम रे मध्य सेकंड, लेक सुपेरियर सरफेस एरिया होची लार्जेस्ट, लेक विक्टोरिया सरफेस एरिया होची सेकंड लार्जेस्ट। बस हे जो एबे चलो, which country has the longest coastline in the world? USA, Australia, Canada, Russia. Which country has longest coastline in the world? देखिए आंसर कौन आसुची, आंसर दे फटाफट फटाफट, एबारोनी भाव टिके, यूएसए ठीक अच्छी, बट रशिया भी तो अच्छी, ऑस्ट्रेलिया भी तो अच्छी, कनाडा भी तो अच्छी, ट्राई करो फटाफट फटाफट। 10C कौच किए, डी इज कमिंग रशिया, शुभकांत कौच रशिया, स्टडी एलोन कौच कनाडा, शत्रु कौच बी ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट आंसर आसुची, देन रशिया कहीं, अच्छा जदि आम यूएसए देखा, यूएसए इज नॉट गोइंग टू बी आंसर, यूएसए तो आंसर हबार नहीं, क्या हाँ यूएसए एपट साइड सेपटे देखा, हाँ ठीक अच्छे, यूएसए भी काफी कोस्टल लाइन अच्छी, मुझे मना करूनी, बट ऑस्ट्रेलिया जदि देखा चारिपटे, यूएसए चारिपटे नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया चारिपटे रही, रशिया भी रही, तो आंसर टिके तुमको डिफिकल्ट रे, तो आंसर हम कौन कनाडा, तो आंसर इज व्हाट कनाडा। तो ऑलमोस्ट हम कहवा तो दुनिया सब हाईएस्ट तुम देख कनाडा, कारण पूरा आर्टिक सुई रही, एपटे रही वेस्टर्न रही गोटे साइड, रशियार केवल आम आर्टिक सी साइडटा देखा ना, तो कनाडा हूँ सब हाईएस्ट, तो ये देखीद। नेक्स्ट 11 नंबर, सरगासो सी इज लोकेटेड विच ओशन, ये तो बहुत थर पढ़ी थी सरगासो सी, सनु प्रसाद कौच कनाडा मे बी करेक्ट एंड योर आंसर इज करेक्ट, सस्मिता इज करेक्ट, कनाडा नॉर्वे इंडोनेशिया, ओके बहुत बढ़िया। चलो सरगासो सी इज लोकेटेड विच ओशन, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic, Arctic, sorry, Arctic. तो ये कौची एसएस कौची, ये शिखा कौची, ये स्टडी अलोन कौची अटलांटिक, एसएस ये दैट इज व्हाट लकी कौची ए, बाकी मैंने देखी देव, ट्राई कर दियो कौन अच्छी, शत्रु कौची ए, चलो ऑब्वियसली आंसर ए। तो सरगासो सी जदि मुझे कहबी सरगासो सी कौन, ताकू कहुए सी विदिन सी, ताकू कौन कहुए सी विदिन सी, ताकू कहुए सी विदाउट बॉर्डर भी कहुए, बॉर्डर लेस सी भी कहुए, सरगासो सी अर्थात सिंपल कौन चारिपटे ओशन कारेन्ट बुलूची, मझुर जे स्टाटिक वाटरटा आम कहू सरगासो सी, एंड सरगासो सी किसी क्लीन नुह, सरगासो सी इज नॉट ए क्लीन सी, इट्स ए हाईली पॉल्यूटेड सी, इट्स ए प्लास्टिक हीप ऑफ द प्लास्टिक ये देखा राइट, ये तेणु गोटे ये बहुत मोस्टली पॉल्यूटेड एंड इट्स ए ऑलमोस्ट डेड सी, इट्स ऑलमोस्ट डेड सी बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक एते पॉल्यूशन थाए जे कहि परिबनी।
ये देख करेक्ट आसो ठीक आसुव गोबी डेजर्ट राइट सारा डेजर्ट आम देखीचे इट्स हट डेजर्ट आफ्रिकार रही आटाकामा डेजर्ट आम देखीचे दैट मीन्स व्हाट चिली कोस्ट रही एंड साउथ अमेरिका कालहारी डेजर्ट आम साउथ अफ्रिका ऊपर देखीचे बोत्सवाना रीजन रे देखीचे एंड गोबी डेजर्ट चाइना एंड मंगोलिया रही इट्स अ कोल्ड डेजर्ट इट्स अ व्हाट कोल्ड डेजर्ट यस सो राइट आंसर इज दैट वंस तो सहीटा तुम राइट आंसर दैट इज 12 रो जदि हम देखो गोबी इज द राइट आंसर सहारा इज हॉट Atacama is hot, Kalahari is hot because ସେମାନେ ଆସୁଛି tropic region ରେ ଆସୁଛି they are somehow ଆମେ got tropic of Cancer and tropic of Capricorn region ରେ ଆସୁଛି and that is why already ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ next questions which of the following rivers crosses equator twice Amazon, Congo, Niger, Zambezi. Amazon river, दुनियार largest river, Congo river, second largest river in the world, Niger river, the longest river in the world, Zambezi river is famous for Victoria Fall. मु एमन को विषय टिके टिके कहिदेली Amazon river, the perennial river and all are the perennial river. ए सबु जाक perennial river. So Congo basin, so one of the largest basin in the world, UPSC 2023 2024 back to back Congo basin ऊपर question पचारछन्ते because of what? Because of the mining, because of some news. तो UPSC जदि देखिबो प्रत्येक वर्ष गोटे question पचारुची इंडोनेशिया रु पचारिबो नले कंगो रु पचारिबो नले अमेजन रु पचारिबो सेटा गोटे तांकर टेक्निक रहिची पचारुचंती तेणु जदि आमे कंगो कहिबा एंड राइट आंसर वुड बी द कंगो आल्सो कॉल्ड एज द जायरे रिवर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग डिस्चार्ज जदि आमे कहिबा एंड इट्स अ पेरिनियल रिवर जो तुम राइट कंगो रही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो एंड कंगो जो रही अमेजन द सेकंड सॉरी द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जोटी तुम रिवर डॉल्फिन थाए नाइजर रिवर मु तुमको कही द नाइजर रिवर्स आल्सो इन आफ्रिका राइट एंड जाम्बेजी आल्सो इन आफ्रिका जाम्बेजी रिवर ऊपर रही वाटरफॉल से वाटरफॉल रो ना होची विक्टोरिया वाटरफॉल केबे भाबीबनी कि विक्टोरिया जोठी लेक अछि सेठी विक्टोरिया रही ना जाम्बेजी रिवर ऊपर रही चलो नेक्स्ट जीवा में which one is the highest plateau in the world? Deccan Plateau, Colorado Plateau USA, Tibetan Plateau Tibet, Pamir Knot in Afghanistan's and Tajikistan region. Which one is the highest plateau in the world? Yes, देखिए हमें आंसर कौन से आंसर इज कमिंग फास्ट SSC आंसर इज ट्रेंडिंग नाउ C is trending Lucky Satru Study Alan Rasmi SS everybody is going for Sikha Bhima Satru Sonita everybody is going for Subhashmita sorry Shubhakant also समस्ते C जाउछंती टाइबेट रो हाइट केते 4000 मीटर तो टाइबेट होची हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड तार हाइट केते द हाइट ऑफ टाइबेट जदि हम कहबा इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लेट टेक्टोनिक जेतरो हेथिला तो टाइबेट रो हाइट केते 4000 मीटर बा जहा को हम कहबा 4 km जहा को हम कहि परिबा एंड तार लेंथ एंड विड्थ एंड ब्रेथ जदि देखिबो तार जो चौड़ाटा रहिछि 2000 किलोमीटर रहिछि चौड़ा टाइबेट प्लेटो रो हाइट एथि पे बढ़िथिला ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जेतले हिमालय रो फॉर्मेशन हला से टाइम रे इंट्रूसिव वोल्केनिक eruption took place and because of that intrusive volcanic eruption the height of Tibetan plateau raised. This is also very important for the formation of Indian monsoon कारण Tibetan plateau जोगु तमे जानछो के कोटेश्वरम कोन पी कोटेश्वरम सॉरी पी कोटेश्वरम जो 1950s रे थ्योरी देइथिले यार मास जो हम कहूचे के रोल ऑफ Tibetan plateau for the formation of monsoon ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को लिंक करके से देइथिले सेटा मध्ये तमने जानि परिबो वर्तमान टाइबेट रे कोन करूछंती चाइना डैम तयारी करूछंती कहा परे ब्रह्मपुत्र ऊपर ये थिला टाइबेट रो चलो फिर नेक्स्ट द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स व्हाट 5000 मीटर नो 4000 मीटर सेटा 5000 तो नो 4000 ना
हाँ शिखा इट्स नॉट 5000 आर यू श्योर मु तो 4000 जानची हाँ आज ही क्लास रे डिस्कस करथली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर is one of the most important strait in the world that connects what? Option 1 the Red Sea, Arabian Sea, Mediterranean Sea and Atlantic Ocean, Black Sea and Caspian Sea, Baltic Sea and the North Sea. Nini Nayak also joining me. Samir also going for the B. Everybody is going for B. Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. That is the correct answer. Is that the Gibraltar? There is a small country called the Gibraltar. Also there, Gibraltar. There is a small nation and Morocco. तो जो जिब्राल्टर स्ट्रेट रही जदि तुम देखिए ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट रही दैट कनेक्ट्स तो जिब्राल्टर स्टेट उपर मु कहि दिए टिके फटाफट तुमको आर उपर किछि वैल्यू एडिशन पार्ट कमी जिबा इफ आई कम्स टू द वैल्यू एडिशन पार्ट ऑफ जिब्राल्टर जदि मु तुमको फटाफट ड्रॉ करके देखिबी हियर वुड बी योर बिलव्ड अफ्रीका सो दिस साइड वुड बी अफ्रीका एंड हियर वुड बी अरेबियन पेनिनसुला जदि हमें देखिबा एंड दिस साइड वुड बी व्हाट सो एठी रही तमरा जिब्राल्टर स्टेट एंड दिस साइड इज मेडिटेरियन सी एंड हियर इज हियर अटलांटिक ओशन दिस इज एटी गोटे छोट देशटा रही ता नाम जिब्राल्टर रही एंड दिस साइड इज मोरक्को तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जदि हमें देखिबा दैट मीन्स ए जिब्राल्टर कंट्री रही पटे एंड दिस साइड इज योर व्हाट मोरक्को मध्य रही आम कहबा मोरक्को तो मोरक्को एपट साइड सेपटे जिब्राल्टर एपटे मेडिटेरियन सी एपटे रहबा अटलांटिक ओशन दिस इज ऑल अबाउट क्या के जिब्राल्टर स्टेट द लाइफलाइन फॉर द मेडिटेरियन सी रीजन पाई रही सेठी मध्य गोटे विंड देखा जाए ता ना होची कोन ता ना कोन लैवेंडर ता ना होची लैवेंडर गोटे लोकल विंड मध्य देखा जाए ये जो तुम जिब्राल्टर स्टेट रे गोटे लोकल विंड देखा जाए ताको कह जाए लैवेंडर आ सेथि पई यूपीएससी क्वेश्चन पचारथला कि लैवेंडर कंट्रीज काको कह जाए those countries are situated on the eastern part of Mediterranean Sea also called as the Lavender countries Levant countries मध्य ताको कह जाए राइट एडा मन रखिबो तो मु तार वैल्यू एडिशन कर देली ओके मेडिटेरियन सी ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी को किए कनेक्ट करूची देखो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी भितर कौन सी प्रकार स्टेट नहीं देयर इज नो स्टेट राइट सेठी मध्य सेमती बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी नॉर्थ सी को किए करूची स्टेट ऑफ काटेगाट करूची कि स्टेट ऑफ काटेगाट राइट ये तुमरो रेड सी अरेबियन सी को किए कनेक्ट करूची बाबल मंडप किए कनेक्ट करूची स्टेट ऑफ बाबल मंडप एठी की अछि बाबल मंडप अछि बस हे गला चलो फिर नेक्स्ट the world's largest coral reef is situated where the world's largest coral reef is situated where देखो ट्राई कर हिजबो Yes, it's about Great Barrier Reef Australia रे अछि and there is also Great Barrier Reef देखियो लास्ट टाइम एठु मध्ये ओपीएससी क्वेश्चन पचारथिले ओपीएससी प्रीलिम्स रे एठु मध्ये क्वेश्चन आसीथिला तुमको सर केमती क्वेश्चन आसीथिला ऑस्ट्रेलिया रो लास्ट टाइम ओपीएससी गोटे मैपिंग वाला क्वेश्चन पचारथिले तारो जदि मो ऑस्ट्रेलिया मैप को ड्रॉ करिबी राइट ऑस्ट्रेलिया मैप को जदि मु ड्रॉ करिबी ये होची तारा क्वींसलैंड दिस इज न्यू साउथ वेल्स दिस इज विक्टोरिया दिस इज साउथ ऑस्ट्रेलिया this one is West Australia, South Australia, North Australia, Queensland, New South Wales and this is Victoria याकू नहीं कि मानकर कैपिटल को नहीं कि गोटे क्वेश्चन पचारथिला एंड हियर इज योर ग्रेट बैरियर रीफ एठी होची ग्रेट बैरियर रीफ आ ये होची तमरो कोरल सी दिस वन इज योर व्हाट कोरल सी एठी होची टॉरो स्ट्रेट एठी की होची तमरो टॉरो स्ट्रेट अछि ऊपर अच्छी गुइना आकु नहीं कि यूपीएससी मध्य क्वेश्चन पचाले गुइना ऊपर देख यूपीएससी 2025 रे गुइना ऊपर प्रीलिम्स रे क्वेश्चन पचाले एठी अछि ओपीएससी लास्ट टाइम 2024 तो हमर 23 जो 2023 जो लास्ट ओपीएससी प्रीलिम्स रे एठू क्वेश्चन पचाले ओपीएससी पचाथले आ ओपीएससी रो फेवरेट होची ऑस्ट्रेलिया ओपीएससी आ पूर्वरु मोरे डार्लिंग रिवर कथा पचारथले ओपीएससी ता पूर्वरु एडिलेड ऊपर क्वेश्चन पचारथले ओपीएससी आ पूर्वरु ग्रेट बैरियर रीफ ऊपर क्वेश्चन पचारची तो ओपीएससी सबले ऑस्ट्रेलिया को फोकस करे नियर बाय रीजन जो ऑस्ट्रेलिया रहिची आकु टिके तमने देखि देउथबो मु तो डिस्कस कर देली मालदीव्स तमे अटल जानचो
राइट। चलो फिर बेलीज रिफ सेठी रही बेलीज पाखे बेलीज ग्वाटेमाला ये छोट छोट देश रही। चल नेक्स्ट वाला जी आम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड ये इजी वन। हाँ जदि तुम कह मिनी नायक्स कौच बी in India the corals are found in your Lakshadweep region, in Gulf of Mannar, in the Palk Strait, Palk Bay. There is also Gulf of Kos, there is also Andaman and Nicobar region. India रे जदि तुमको कोरल पछारे कोठी देखा जाए अंडमान एंड निकोबर, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, लक्षद्वीप, गुजरात कोस्ट ये सब रीजन रे। बट ध्यान से शुणव कौन से भी रिवर माउथ रे कोरल मिले ना, चाहे से महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, रिवर माउथ रे कोरल देखा जाए ना बिकॉज ऑफ टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। बिकॉज ऑफ व्हाट? टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। चलो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑब्वियसली ब्राजील जानिच। देन मते मुझे तुमको पचार द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, चले इंडिया रे किए? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? कोरापुट कॉफी तो जानिचे तुम, कोरापुट आरबिका रोबस्टा सब अधिक प्रोडक्शन कौन होता है? आरबिका रोबस्टा एंड कोरापुट कॉफी को जीआई टैग मिली कौन? जीआई टैग्स जाइए। कोरापुट कॉफी आजिकल जानिच तुम गवर्नर जाइए, गवर्नर जाइए कोरापुट कॉफी पीछे कोरापुट जो जाइए से कहते दिस इज हाउ द टेस्ट ऑफ कोरापुट कॉफी द आरबिका रोबस्टा जोटा तुम कौच कर्नाटक एंड दैट वुड बी व्हाट? कर्नाटक। It's not Assam. Assam is tea. Bhimo Gouda, Assam is tea. It's a Karnataka. So answer is what? Karnataka. So answer would be what? Karnataka. ମୁଁ एकथा मध्य कहितली कर्नाटकर कोडागु डिस्ट्रिक्ट कौन कहितली मु कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कैपिटल ऑफ कॉफी ऑफ इंडिया। कोडागु कैपिटल बस करेक्ट। चलो फिर एंड कॉफी पई मु तुमको क्लाइमेटिक कंडीशन मध्य कहितली व्हिच लैटिट्यूड कॉल्स एज द रोरिंग फोर्टिस। Which latitude is called as roaring 40s? Roaring 40s, furious 50s, serious sinking। तीनटा मु कहितली जेतरे मु विंड पढ़ितली जेतरे मु तुमको कहितली कि सदर्न हेमिस्फीयर रे जो हमर वेस्टर्ली को तीनटा ना रे जाना जाए रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s कोन फ्यूरियस 50s एंड सीरियस सिंकिंग। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कोठी अछि सेटा भी तो क्वेश्चन पचार पारे कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कोठी अछि दैट कुड बी द क्वेश्चन। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया सेटा भी क्वेश्चन नहीं पारे। ओके ओके देखिबा 30 एटा 40s से कहछि 40s 40 to 50 ना एटा 30 to 40 नहीं जीवो दैट वुड बी परफेक्ट वन। बी विल बी द आंसर सी बी एंड देखो एटा कहछि कोन होछि मु बुझी पाउछु कंफ्यूजन काहे के आसुछि। सी जदि कहबो 40 ରୁ 50 हे जीवो तले 50 ରୁ 60 60 ରୁ 70 सेमति नेले भी हबो सेमति नेले एक्चुअली कोन देखो ये जो हमरो सदर्न हेमिस्फीयर रे जो वेस्टर्ली को 40 डिग्री लैटिट्यूड रे कहा जाए रोरिंग 40s, 50 डिग्री लैटिट्यूड रे कहा जाए फ्यूरियस 50s, 60 डिग्री लैटिट्यूड रे कहा जाए सीरियस सिंकिंग। तो सही अनुसार आम 40 ରୁ 50 भी नहीं पारिबा किछि असुविधा नहीं। मु कहली ना कॉन्सेप्ट तो आम बुझीचे ना कहीं स्पीड अधिक थाए। जदि मु एई क्वेश्चन टाको बुलेकी पचारि देबी कि व्हाई सदर्न हेमिस्फीयर द विंड स्पीड ऑफ द वेस्टर्ली विंड स्पीड इज मोर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाई? ओ एटा नॉर्थ देइछि कि अच्छा मु देखिनी ओके ठीक अछि एटा नॉर्थ देइछि ना मु देखिनी छाड़ दियो। तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके ए नॉर्थ तो कटि जिवे तो साउथ रे रहिबो ओ कोन कोन पई वाई सदर्न हेमिस्फीयर विंड स्पीड कहीं अधिक कहीं ये 40s देखा फ्यूरियस 50s देखा सीरियस सिंकिंग देखा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड मास बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट लेस फ्रिक्शन एंड दैट इज व्हाई द स्पीड इंक्रीजेस। नाउ कम्स टू 19 नंबर क्वेश्चन। चोट इल जेरिट इज
A salt lake located in where? Mountain nahi, seta mountain kuhani lack of land mass. That would be what? Lack of land mass. That would be the proper answer. Lack of land mass. Lack of land mass. And you will get the PDF. Where you will get the PDFs? The PDF you will get in the last lesson ro jo PDF mu share kar deythili, you will get the PDF here. You will get PDF here. Right? You will get PDF here. OS Mentor, right? Name is going for C. Chalo, for rest is, let's see, as majority is coming with the C, it's the C. Rasmi is coming with C, majority is coming with the C. Chalo, बहुत बढ़िया, great, great. This is very important questions. Can I current affair news रहता है? These are the factuals. Now the 20 number questions, you have to match it. 20. So let me, you have to match it. Which of the following pairs is correctly matched? Kilimanjaro, Kenya; Mount Elbrus, Russia; Mount Aconcagua, Argentina. Pink color lake ethipe hita because of algae. Because of what? Algae. The color of the lakes that turns during the summer season to the pink because of the growth of salt loving algae. Not due to the certain colors like the pink as you, right? So Seda Sadhamta in the Australia, and that is why those lake that turns into the pink colors during the summer season, that happens because of that salt loving algae's exponential growth. OS Mentor. And all these PDFs you will get. Apart from that, ये सबू तमन को मिलिबो कोठी. OS Mentor. You will get PDF here. See, Mount Kilimanjaro is not in Kenya. This is in that is what? So that would not be there. That is Tanzania side. बहुत बढ़िया. And so that is why A is wrong. So as the A is cancelled, that is why B is the correct answer. So the B is correct answer. Mount Kilimanjaro is the highest and the volcanic mountain of Africa. Recently, a Odia boy scaled this mountain. Mount Elbrus, the highest peak of Mount Caucasus, which is in Russia, that is the correct one. Mount Aconcagua, the highest peak of what? That is Europe. That is what? Andes. That is Andes. Setter rebo tomorrow Andes, and that is also correct. That is also correct. So 2 and 3 is correct. 2 and 3 is correct. That means the B is the right answer. The B is the right answer. Okay. Then what is the highest peak of New Zealand? Anyone? The highest peak of New Zealand. Because you have to go through all those peaks. Highest peak of New Zealand. Anyone? What would be the highest peak of New Zealand? And what would be the highest peak of India? Whether the highest peak of India is Mount Everest, K2, or Kanchenjunga, or that is Nanda Devi. It's a Mount Cook. New Zealand ro kono Mount Cook. New Zealand ro kono Mount Cook. In India it's a K2. In India it's a K2. In Europe Mount Blanc hame dekhiche. And jodi Alps ro jibo, that would be what? Alps ro kono kahitile? Mount Blanc, Alps ro kono? Mount Blanc. Caucasus ro Elbrus dekhitile. What is the highest peak of Appalachian? Anyone? Mount Everest, no, a K2. India K2. It's not Everest. It's a K2. Everest the Nepal rahela na. Kanchenjunga, no. Saraswati is not Kanchenjunga. It's a K2. Mount Cook. Cook का नाम सर हितला. What is the highest peak of Appalachian?
Anyone? The Appalachian, one of the oldest mountains of the world, situated parallel to the eastern coast of North America. कौन कहबे सेटा? ये अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड वाला कथा मते कहनी हैला. दैट डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कौन? दिस इज नॉट डिस्प्यूटेड, दैट इज आवर्स. बस खत्म कहानी. K2 is ours. राइट चलो फिर. तो ये थे आज 20 क्वेश्चंस. प्रत्येक दिन मु 20 क्वेश्चंस नहीं कि आसी थाए. 20 क्वेश्चंस थाए बट 20 रु अधिक आनी थे. बट आज सडनली 20 क्वेश्चन होची काली तमे मोर देन 30 क्वेश्चन डिस्कस करथले. सो नेक्स्ट टॉपिक टुमारो वी विल हैव सम एनवायरनमेंट क्वेश्चंस. सेम रहिबो टाइम 7 रु 8 प्रत्येक दिन मु आसुची StudyIQ प्लेटफॉर्म रे यूट्यूब लाइव. आमे काली एनवायरनमेंट अच्छी देन साइंस टेक आगु को नेबी. तो ज्योग्राफी लगभग काफ़ी मुझे डिस्कस कर सारी. तो आगु को आई विल फोकस on the coming days I will focus on environment science take part, right? So that would be my focus area, and I hope the amount of geography MCQ I have discussed in these live sessions in the coming 1 month, that would be sufficient and that will helpful for you. That will definitely help you, right? Any kind of help you can reach out to me in the Telegram channel. Thank you everyone. Good night to all.